page. So today we'll discuss about the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, which mainly came across in a lot of judicial exams. So you have to understand this, and for prelim purpose this is very important. So the Protection of Women from Domestic Violence is the Act 43 of 2005, and the President assent got on 13th September 2005. The enforcement date is 26th October 2006. The main purpose means the preamble of this act is an act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family and for matter connected therewith or incidental thereto, be it enacted by Parliament in 56th year of Republic of India as follows. So without wasting any time, let's get into the chapter. This chapter you have 37 sections, 5 chapters, and the first chapter talks about preliminary, which includes a title, extent and commencement and definition as always. Section 1. This act may be called the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. It extends to whole of India. It shall come into force on such date as the central government may by notification in official gazette appointed. That is, the date of enforcement is 26th October 2006. Okay. Section 2 talks about the definition. Here 2A talks about aggrieved person, means any woman who is or has been in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subject to any act of domestic violence by respondent. मतलब यहाँ पे victim को aggrieved person बोला जाता है और that must be a woman. Section 2 clause B. Child means any person below the age of 18 years and include any adopted step और फोस्टर चाइल्ड. कोई भी बच्चा 18 साल से नीचे, वो अडॉप्टेड भी हो सकता है, स्टे भी हो सकता है, फोस्टर चाइल्ड और कोई भी चाइल्ड, वो सब चाइल्ड में जाएंगे. सेक्शन 2 क्लॉज सी. कंपेंसेशन ऑर्डर दैट इज रिटेन अंडर सेक्शन 22. कस्टडी ऑर्डर दैट इज explained under section 21. Domestic incident reports, that is section 2 clause E, means a report made in the prescribed form on the receipt of complainant of domestic violence from an aggrieved person. Domestic relationship, that is section 2 clause 8, means a relationship between two persons who live or have at any point of time lived together in shared household. When they are related by consecutive marriage or though a relationship in the nature of marriage, adoption or are family member living together as a joint family. Section 2 clause G talks about domestic violence, has the same meaning as assigned to it in section 3. Section 2H dowry shall have the same meaning as assigned to it in section 2 of Dowry Prohibition Act 1961. Magistrate means the judicial magistrate of first class or as the case may be, the metropolitan magistrate exercise jurisdiction on the person reside temporarily or otherwise or the respondent reside or the domestic violence is alleged to have taken place. Here a prelim question arise that what is the meaning of magistrate, but you have to answer like here judicial magistrate is the first class and metropolitan magistrate. Medical facility means any facility as may be notified by the state government to be a medical facility for purpose of this act, that is under section 2J. Section 2K is talks about monetary relief, means the compensation which the magistrate may order the respondent to pay to aggrieved person at any stage during the hearing of an application seeking any relief under this act to meet the expenses included and the losses suffered by the aggrieved person as a result of domestic violence. Section 2L notification means a notification published in the official gazette and the expression notified shall be constructed accordingly. Prescribed, which is under 2A, means prescribed by rule made under this act. Protection official means an officer appointed by the state government under subsection 1 of section 8. Section 2 clause O talks about protection order, means an order made in term of section 18. Section 2 clause P
talks about residence order means an order granted in term of subsection 1 of section 90. Section 2 clause Q talks about respondent means any adult male person who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under this act, provided that an aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of marriage may also file a complaint against a relative of the husband or male partner. Okay, service provider is explained under section 2 clause R means an entity registered under subsection 1 of section 10. Shared household, that is explained under section 2 clause S, means a household where the person aggrieved lived or living with the respondent and any stage of domestic relationship in household which is owned jointly or singly or owned or tenanted. एनीथिंग, एक घर होना चाहिए जिसमें वो दोनों एक साथ रह रहे होंगे और कभी रह रहे होंगे, अभी नहीं रहते, लेकिन एक घर में दोनों रहना चाहिए. तो भाई डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है ना, नहीं तो कैसे डोमेस्टिक वायलेंस होगा. भाई मैं यहाँ पे हूँ, मेरा पार्टनर कहीं और है और मैं बोलूँगी मेरे साथ तो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. लेकिन लिव इन पार्टनर्स डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर आएंगे और जो पति पत्नी आ सकते हैं. एक जो पत्नी होता है उसको अपना सास मतलब तंग करता है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ सकते हैं. तो एक शेयर हाउस होल्ड होना ही चाहिए. ओके, सेक्शन 2 क्लास 8 shelter home means any shelter home as may be notified by the state government to be shelter home for the purpose of this act. इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर मतलब सेक्शन 1 एंड 2 खत्म होता है. सारे सेक्शंस और डेफिनेशंस यहाँ देख लेना, प्रीलिम्स से बहुत आते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 2 दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस. चैप्टर 2 में सिर्फ सेक्शन 3 है एंड उसका डेफिनेशन बताया गया है. The definition of domestic violence. For the purpose of this act, any act, omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case it harm or injury or endangers the health, safety, life, limb of well-being, where mental or physical of the aggrieved person or tends to do and include causing physical abuse, sexual abuse, verbal abuse and emotional abuse and economic abuse, causes harm, injury or injures the aggrieved person with the view to concern her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property or valuable security. Section 3 class C has the effect of threatening the aggrieved person or any person related to her by any conduct mentioned under clause A or B also include domestic violence. Otherwise, injuries or causing harm, whether physical, mental, to the aggrieved person is also included under domestic violence. Explanation 1. For the purpose of this section, physical abuse means any act or conduct which is of such a nature as to cause bodily pain, harm or danger to life, limb or health or impair the health of development of aggrieved person and include assault, criminal intimidation and criminal force. Sexual abuse include any conduct of a sexual nature that abuses, humiliates, degrades or otherwise violates the dignity of woman. Verbal and emotional abuse include insults, ridicule, humiliation, name calling and insult or ridicule, especially with regard to not having a child or male child, and repeated threat to cause physical harm to any person in whom the aggrieved person is interested is also under domestic violence. Economic abuse include deprivation of all or any economic or financial resources of to which the aggrieved person is entitled under any law or custom, whether payable under an order of a court or otherwise, or which the aggrieved person requests out of necessity, including but not limited to household necessities for the aggrieved person and her children. If any Sridhan property jointly or separately owned by the aggrieved person,
payment of rental related to the share household and maintenance. Disposal of household effect any alienation of asset, whether movable, immovable, valuable shares, security bond and the like or other property in which the agreed person has an interest or is entitled to required by the agreed person of her child or her stridhan or any other property jointly or separately held by the aggrieved person. Prohibition or restriction to continued access to resources or facilities which the aggrieved person is entitled to use or enjoy by virtue of the domestic relationship, including access to share household. So this is all about domestic violence under chapter 2 and section 3. So let's get into chapter 3, that is talks about power and duties of protection officer and service provider. So domestic violence पता चल गया, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन में पढ़े थे प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है. अगर ये दो आप समझ गए तो भाई सब समझ गए. सो सेक्शन 4, इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी informant. Any person who has reason to believe that an act of domestic violence has been or is likely to be committed may give an information about it to the concerned protection officer has no liability or civil or criminal shall be incurred by any person for giving in good faith of information for the purpose of subsection. मतलब अगर कोई भी इंसान किसी कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे तो उसके खिलाफ कोई भी सिविल क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी, ये बताता है सेक्शन 4. सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मैजिस्ट्रेट. ए पुलिस ऑफिसर, protection officer, service provider or magistrate who has received a complaint of domestic violence or is otherwise present at the place of an incident of domestic violence or when the incident of domestic violence is reported to him shall inform the aggrieved person of her rights to make an application for the obtaining a relief by way of protection order, an order for monetary relief, a custody order, a resident order, a compensation order or more than one such order under this act. Of the availability of service provider and the availability of service of protection officer of her rights of free legal service under the Legal Service Authorities Act 1987 and of the accused person's right to file complaint under section 498A of IPC wherever relevant, provided that nothing in this act shall be constructed in any manner as to relieve a police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to commission of a cognizable offense. मतलब अगर कहीं भी आता है पहले रिपोर्ट, भाई हाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, अग्रीड पर्सन आके बताता है, तो पहला ड्यूटी यही होता है कि उसके राइट्स को उसको बताना, भाई तुम्हारे पास क्या क्या राइट्स हैं, तुम क्या क्या कर सकते हो. सो सेक्शन 5 यही हमको बताता है. So now we are into duties, that is under section 6, 7, 9 and 11. Section 6 talks about the duties of shelter home given shelter to aggrieved person on request of aggrieved person or service provider or protection officer. मतलब shelter home दिया जाएगा किनकी रिक्वेस्ट पे, aggrieved person, सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर के. सेक्शन 7 में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा. मेडिकल फैसिलिटी गिवन मेडिकल एड टू aggrieved person on request of aggrieved person, protection officer, service provider. Section 9 is talks about protection officer. And 11, duty of the court, publicity of act in media, awareness training of officers, coordination between department and ministry, protocol for government ministry. मतलब ड्यूटी गवर्नमेंट का क्या क्या ड्यूटी है, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए, भाई वो सारे मतलब जो कैंपेन करते हैं ना गवर्नमेंट, लड़की बचाओ, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस किससे लोगों को पता चलेगा. मोस्टली इन रूरल एरिया मोस्ट ऑफ द वुमेन इवन डोंट नो
they are suffering from domestic violence. Okay, so awareness बढ़ाएंगे भाई. So section 8, appointment of protection officer. State government shall appoint notification appoint protection officer each district. हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करेगा. ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर जो सेक्शन 9 में बताया गया था, टू असिस्ट मजिस्ट्रेट इन डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन, टू मेक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, मेक एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट इफ अग्रीड पर्सन डिजायर list of all service provider given legal aid, counseling, shelter home to agreed person, provide legal aid, give shelter home to agreed person, its copy to police station having jurisdiction of shelter home, get agreed person medical examine and ensure execution of monetary relief under section 20. Section 10 is who is the service provider and the duty. Voluntary Association Society Registration Act 1860 के तहत कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो रजिस्टर होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं. द एप्लीकेशन टू स्टेट गवर्नमेंट टू रजिस्टर इट एज सर्विस प्रोवाइडर. तो इसका ऑब्जेक्टिव भी है टू प्रोटेक्ट राइट इंटरेस्ट ऑफ वुमेन बाय लीगल एड, मेडिकल फैसिलिटी, फाइनेंस असिस्टेंस एंड एवरीथिंग लाइक दैट. फंक्शन क्या होता है, मतलब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को रिकॉर्ड करना, कॉपी मजिस्ट्रेट को देना, प्रोटेक्शन ऑफिसर मतलब प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना, मेडिकल एग्जामिन ऑफ अग्रीड पर्सन करवाना, प्रोवाइड शेल्टर होम टू अग्रीड पर्सन. ये सारे आते हैं ड्यूटी सर्विस प्रोवाइडर की. और अगर हम सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पढ़ लिए तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में पढ़ लेते हैं जो सेक्शन 30, 33, 34, 35 में आता है. मिसलेनियस प्रोविजन मतलब चैप्टर 5 में आता है. प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर while activity under the act called public servant under section 21 of IPC. Section 33 talks about penalty for not discharging duty rightfully. 1 साल के लिए उनको imprisonment हो सकता है, 20,000 तक फाइन भी हो सकता है. Section 34 cognizance of offense committed by protection officer, no cognizance can take without the sanction of state government. And section 35 protection of action in good faith, no suit, no proceeding, no prosecution in good faith. मतलब अगर गुड फेथ में कोई कुछ काम करता है तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा. प्रोटेक्शन ऑफिसर को मतलब वो पब्लिक सर्वेंट की तरह रखते हैं ना, तो भाई उनका अपना काम करना चाहिए. लेकिन अगर वो मतलब सक्सेसफुली राइटली उनका ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करेंगे भाई तो 1 साल की है इम्प्रिजनमेंट भेज दो, 20,000 की फाइन, 20,000 की फाइन भी है. तो ये सारे हैं. एंड फॉर योर टाइम इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ दिस अंडर चैप्टर 5 इन मिसलेनियस प्रोविजन. सो ये पढ़ा लिया है पहले क्योंकि ये दो अगर तुम अच्छे से जान जाओगे तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि चैप्टर 5 प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल इन दिस एक्ट. सो चैप्टर 5 में 12 से 29 तक सेक्शन से प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर ऑफ रिलीफ, ऑर्डर्स, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंसी ऑर्डर, मॉनिटरी ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, कॉम्पेंसेशन ऑर्डर जो 18 से 22 तक है. एंड प्रोसीजर 12 से 16 और 30 से 29 अच्छे से प्रोसीजर देख लेना. ओके. सेक्शन 12 एप्लीकेशन फॉर रिलीफ बाय अग्रीड पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर, एनी अदर पर्सन बिहाफ ऑफ अग्रीड पर्सन. मतलब अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो भाई पहले एप्लीकेशन तो दिया जाएगा ना, तो किसको दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट को. विल कंसिडर डोमेस्टिक वायलेंस फॉर रिलीफ. फास्ट हियरिंग 3 दिन के अंदर हो जानी चाहिए बाय कोर्ट. फाइनल डिस्पोजल मतलब 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए फास्ट डेट ऑफ हियरिंग के हिसाब से. स्टेप 2 दैट इज सेक्शन 13 सर्विस ऑफ नोटिस. हमारा पहले एप्लीकेशन दिया गया, अब सर्विस ऑफ नोटिस कैसे होगा, मजिस्ट्रेट देंगे, किसको देंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर को फॉरवर्ड रेस्पोंडेंट. मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑफिसर को देंगे कि भाई इसको फॉरवर्ड कर दो रेस्पोंडेंट को विद इन 2 डेज. ओके, मैक्सिमम 2 डेज के अंदर ये हो जाना चाहिए. एंड प्रूफ ऑफ सर्विस, डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर. प्रोटेक्शन ऑफिसर ये सब दिखाई भी देना चाहिए. उसके बाद स्टेप 3 जो सेक्शन 14 काउंसलिंग
agreed person or respondent jointly or separately by the member of service provider after counseling next hearing within 2 months. Section 15 is assistance of welfare expert to magistrate. magistrate को हेल्प मतलब जो बोलते नहीं क्या, सिचुएशन की गंभीरता समझाएंगे कौन? वोमेन, क्योंकि वो ज़्यादा समझते हैं ना, लड़कियों को ज़्यादा समझेंगी, इसीलिए। सेक्शन 16 में प्रोसीडिंग इन कैमरा, मतलब अगर पार्टी डिजाइन करी भाई हमको प्रोसीडिंग इन कैमरा करना है तो कर सकते हैं। एंड सेक्शन 17 राइट टू रिसाइड इन शेयर हाउस होल्ड एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब भाई हमारा राइट है रहने का, ये शेयर हाउस होल्ड में मुझे कोई नहीं निकाल सकता, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर सास तंग कर रहा है तो क्या होगा? लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि लड़कियों को लड़कियां नहीं निकाल सकती, लड़कों को निकाल सकती है। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस while answering the MCQs. Okay, now let's talk about the orders. That is under section 18 to 22. First 18 talks about protection, then 19 residence, then 20 monetary relief, 21 custody order, then 22 compensation. So section 18 protection order, when that will be, that is when prima facie and magistrate is of opinion of domestic violence, give protection order in favor of aggrieved person and prohibit respondent to commit any domestic violence to dependent of aggrieved person, and to give notice to no entry employment place of aggrieved person, and not to try communicate to aggrieved person, and don't annulate any asset, bank lockers, than anything. So to protect wholly to the aggrieved person is the main purpose of protection order. Section 19 of President's order instruct respondent to discharge aggrieved person in possession of share household, remove respondent from share household, and when the respondent is also woman, then she can't be removed from share household, and it's only applicable for the male respondent. Okay, so restrict respondent's relative entered that part of share household where aggrieved person live, restrict disposing share household, restrict renouncing aggrieved person from right in share household, arrange alteration accommodation for aggrieved person and payment for the rent. Okay, if possible. Order to protect the child of aggrieved person and aggrieved person, execute a bond deemed bond under Chapter 8 of CRPC, direct protection officer to give protect to aggrieved person and impose obligation on response of payment of finance need of aggrieved person, direct respondent to return stridhan of aggrieved person. It is under section 19 of residence order. ओके, रेसिडेंस का मतलब है घर में रहने का अधिकार भाई तुमको देना पड़ेगा तुम्हारी जो अग्रीड पर्सन है जिसके ऊपर तुमने किया है क्या, डोमेस्टिक वायलेंस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉनिटरी लीव. Here the magistrate direct the respondent to pay for loss, expenses suffered by aggrieved person and the child. ओके, लॉस ऑफ अर्निंग, अगर डोमेस्टिक वायलेंस तुमने किया उसका भाई जॉब चला गया तो तुमको पैसा देना पड़ेगा. मेडिकल एक्सपेंसेस, भाई तुमने मारा है उसको इतने तेज, उसको पट्टी लग गई, उसका मेडिकल एक्सपेंसेस कौन देगा. लॉस एंड डैमेज रिस्ट्रिक्शन मेंटेनेंस ऑफ अग्रीड पर्सन एंड चाइल्ड, इट इज अंडर मॉनिटरी लीव. ओके, हाउ मच, मतलब कुछ भी हो सकता है, एडिक्वेट और मतलब रीजनेबल कॉस्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि 5 लाख 10 लाख, भाई जितना खर्चा हुआ है उतना ही देंगे. ओके, कॉपी ऑफ ऑर्डर टू पार्टीज एंड पुलिस स्टेशन इन चार्ज where respondent reside, when to pay period specified on order. If the respondent fail to pay, then what happen? Then that will be recovered from her employer debtor of respondent. मतलब जहाँ पे वो नौकरी करता है सीधा भाई उस वहाँ से ले लेंगे वो, ऐसा नहीं भाई तुम नहीं दोगे, भाई जहाँ पे जाएगा मजिस्ट्रेट ले आएगा. सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट कस्टडी ऑर्डर.
Okay. 21 and 22 compensation order. Custody order at any stage of hearing of application, custody of child to aggrieved person. If visit of respondent harmful, then magistrate may refuse to allow the visit. And section 22 compensation order. Application by aggrieved person for injury, mental and physical जो इंजरी हुआ है उसके लिए कंपनसेशन, इमोशनल डैमेज हुआ है भाई तुमको पैसा देना पड़ेगा. डोमेस्टिक वायलेंस करोगे ना भाई बहुत लंबा जाओगे. तो देख के ऑलमोस्टली गाइस आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, सो बी केयरफुल बॉयज. ओके, ऑर्डर तो हो गया. सो नाउ सेक्शन 23, power to grant interim and ex parte order. Magistrate may under section 18 to 22 satisfied prima facie that respondent is committing domestic violence, then he can grant interim and ex parte order. Okay. In section 24, court to give copy of order free of cost to parties, protection officer, service provider, तीनों को देगा free of cost में court copy of order. Section 25, duration and alteration of order. Under section 18 of protection order until agreed person apply for discharge. Until this is the duration of alteration of order. Relief under other suit 26 before civil court. Agreed person inform magistrate such relief under 18 to 21. मतलब अगर किसी और कोड में तुम मतलब क्या CRPC में भी कुछ अगर ले लिए हो तो भाई बता देना कि भाई हमको वहाँ पे भी कुछ मिल गया था, यहाँ पे भी आए हैं क्योंकि ये इंसान नहीं रुकता. मतलब अगर एनी अदर सूट में तुमको रिलीफ मिला है तो ये तुम्हारा ड्यूटी है कि तुमको बताना चाहिए. 27 टॉक्स अबाउट jurisdiction, that is JMFC, मतलब Judicial Magistrate First Class and Metropolitan Magistrate in whose local limit the domestic violence occur or aggrieved person reside or respondent carried business, employed or cause of action arise. Okay. Order enforceable throughout India, मतलब इन सब जगह में jurisdiction है. 28 talks about the procedure under section 12, 18, set 23 and 31 as CRPC 1973 apply. Under section 12 and 23 clause 2, court own procedure, मतलब उसके हिसाब से वो procedure कराएगा. Appeal is under section 30 to court of session within 30 days from the date of order when the serve of aggrieved person or respondent. मतलब क्या JMFC में ऑर्डर हो गया, आपको पास 30 दिन है, आप अपील कर सकते हो. समझ में आया क्या? सेक्शन 31 पेनल्टी. If respondent breach the protection order, the punishment is 1 year or 20,000 or both fine and imprisonment. Tribal magistrate who passed order while framing charge can also put section 498A IPC. Section 32, the nature of offence should be cognizable, non-bailable, unaggrieved person, sole testimony से सीधा अंदर जाओगे. Respondent can be convicted by sole testimony of aggrieved person. Section 36, this act not in derogation with the law means this law has its own value and there is no restriction to other law. Everyone can do accordingly. And most importantly, section 37. Okay, the last section, power to make rule, that is on central government. So पहले 1 से 37 फिर से पढ़ ले. 1 application, 2 definition, 3 domestic violence, 4 information, 5 duty, police, protection officer, service provider, magistrate, इन सब की. Section 6 shelter home की duty, 7 medical facility, 8 protection officer appointed, 9 उनका duty, 10 service provider, 11 में duty of government, 12 से 29 procedure for obtaining orders for relief, 18 से 22 तो तुमको पता है important orders you have to remember. And chapter 5 जो 30 से 37 होता है ये सब खत्म हो गया. Thanks for watching. Do like, share, subscribe to Legal Prep. बहुत मेहनत लगी है. I hope this helps and please subscribe another time I am saying because I am seeing all of you are watching and not subscribing. For whatever purpose you are watching, may you got the success. Bye bye. We'll meet next time with a new act. Okay, bye.